Good evening. GVL Narasimha Rao, Vinod Bansal, spokesperson of the VHP, Ashok Pandit, director and activist, Syed Asim Waqar, national spokesperson of the AIMIM, Ghanshyam Tiwari, leader of the Samajwadi Party, Alimuddin Khan, political analyst, Saban Naqvi, senior journalist. But my first question is to Vinod Bansal. आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और आज ही झारखंड में एक और बंदे को मार दिया। मार के इतना मारा उसको कि अस्पताल पहुंचाते दम निकल गया। मार दिया और क्या कहना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गौ के नाम पे हत्या ना करें। नहीं तो आप और एक और की हत्या हो गई आज। नहीं, गौ के नाम पर कौन सी हत्या हो गई मुझे बताइए। देखिए, जो हत्यारा है उसको दंड मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और आप जिस तरह से दिखा रहे हैं कि जो ट्रेन में जो इंसिडेंस हुई, एक सीट के, मेरी बात तो सुनिए आनंद जी, जो सीट के ऊपर झगड़ा होता है, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता है और एक आदमी मर जाता है, उसको गौरक्षा से कैसे जोड़ सकते हो? मैंने ट्रेन की बात की, आखिरकार मैंने ट्रेन की बात की। पहलू खान जो मरता है, विनोद बंसल जी, उसके पास क्यों कोई डॉक्यूमेंट? विनोद बंसल जी रुकिए, मैंने ट्रेन की बात की। मैंने कहा आज झारखंड में 3 लोग गाय लेके जा रहे थे, शायद तस्करी कर रहे थे, शायद चोरी कर रहे थे, नहीं मालूम, लेकिन उनको फिर दी सो कॉल्ड गौरक्षकों ने रोका। 2 भग गए, एक था गाड़ी चला रहा था, उसको बाहर निकाल के इतना मारा, जब तक पुलिस आई उन्होंने इनको खदेड़ा और इसको अस्पताल लेके गए, मर गया। आज कुछ और थे, कोई स्वामी बाबा के लोग थे, गुंडे, तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री साबरमती में कह रहे थे गौ के नाम पे हत्या ना करो, इन्होंने फिर घेर लिया। पैनी में प्रॉपरली कागजात के साथ इनको लेके जा रहे थे, पैनी टू डिंडिगल इन तमिलनाडु। वहां जाके फिर लड़ाई कर दी, पुलिस को आके इनको लाठियां बरसानी पड़ी, तब वो जाके हटे वहां से। प्रधानमंत्री आपके देश के कह रहे हैं कि गौ के नाम पे हत्या नहीं करो, और आए दिन यहां पे बर्बरता ज्यादा हो रही है। अब आप ये बताइए कि उनको क्या हक बनता है कि किसी को बाहर निकालें गाड़ी से और मारे इतनी बर्बरता से और उसकी जान ले लें? आनंद जी, देखिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर के देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि जो हत्यारा है, चाहे गौ का हत्यारा हो या मानव हत्यारा हो, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम भी शुरू से कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने भी जिस धरती से बोला वो गांधी और विनोबा भावे की धरती है। आपको याद होना चाहिए कि गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था कि स्वतंत्र भारत में अगर पहला कानून बने तो गौरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। और विनोबा भावे ने क्या कहा था, सुनिए मेरी बात को। अब मैंने आपकी बात को पूरा ध्यान से सुना, मुझे भी अवसर दीजिए। मैं कहता हूँ विनोबा भावे ने गौरक्षा के लिए कानून बनाने के लिए अनशन किया था कि नहीं किया था? पर उन्होंने ये तो नहीं, उन्होंने कहा मर जाओ। बात से भटक रहे हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद ही बोल दिया, ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही बोल दिया। उन्होंने कहा मैं उनकी बात को मानता भी हूँ, वो होना चाहिए, लेकिन इसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए। आप उस पे बात कीजिए ना। बताइए Vinod Bansal, we are not here to sit and discuss with you cow protection laws. We are here to discuss with you the violence that gets unleashed in the name of cow protection. There is a message that has come from the Prime Minister. Now, if you want his message to be implemented on ground, Vinod Bansal, क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो बोला है उनका मैसेज हर जगह पहुंचे और उसको माना जाए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए? क्या आप ये मानते हैं कि नहीं? आप ये कह रहे हैं कि जो भी हत्यारा है उसको पकड़ा जाना चाहिए, तो आप ये मानते हैं वायलेंस नहीं होना चाहिए? आप ये मानते हैं वायलेंस नहीं होना चाहिए सर? मानते हैं ना? तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप ये सपोर्ट करते हैं, जैसे आप ये सपोर्ट करते हैं कि गौ की रक्षा होनी चाहिए, जो लोग इन गुंडों के हाथ मारे जा रहे हैं गौ रक्षा के नाम पे, आप उनके लिए क्या करेंगे? आप क्यों नहीं एक और कैंपेन और कार्यक्रम चलाते हैं जहां पे ये गुंडे जो गौ रक्षा के नाम पे घूम रहे हैं उन पे क्रैकडाउन किया जाए? आप गवर्नमेंट की उसमें हेल्प क्यों नहीं करते? क्या गौ रक्षा का नाम खराब नहीं हो रहा है? क्या गौ रक्षा का नाम खराब नहीं कर रहे ये गुंडे? नो, आई डू हैव ए स्ट्रांग ऑब्जेक्शन टू इट। जी, आप गौ रक्षकों को नहीं, तन्वी सुनिए मेरी बात को जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि गौ रक्षक गुंडा नहीं हो सकता और गुंडा गौ रक्षक नहीं हो सकता, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जो नहीं देखिए, मेरी बात को सुनेंगे तब तो मैं बताऊं, बोलूंगा। मैं कह रहा हूं आपको, प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि कोई भी रक्षक जो है, जो रक्षा के लिए निकलता है, गौ रक्षा के लिए निकलता है, वो भक्षक कैसे हो सकता है? और जो भक्षक है वो गौ रक्षक कैसे हो जाएगा? तो वो दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। हाँ, इतना जरूर है
अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है, अगर कोई व्यक्ति को निरपराध लोगों को मारता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई साथ साथ उसके खिलाफ भी होनी चाहिए जो सरेआम हिंदुओं को चिढ़ा करके गौमांस की पार्टी करते हैं। कार्रवाई उनको उस कांग्रेस के खिलाफ भी होनी चाहिए जो अपने ऑफिस के बाहर बछड़ा काटते हैं, विनोद बंसल जी पार्टी करते हैं। विनोद बंसल जी रुकिए, वो बात कैसे अलग है? विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी सुनिए, विनोद बंसल जी, जिस महात्मा गांधी का हवाला आज प्रधानमंत्री जी ने दिया, उन्हीं महात्मा गांधी जी ने पता है क्या कहा था? मैं आपको जरा पढ़ के सुना देता हूं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि गौ रक्षा मेरा धर्म है, पर इस देश में अनेक जाति के लोग रहते हैं, सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं। इस देश में क्रिश्चियन, ईसाई, पारसी सभी रहते हैं, तो मेरा अपना इरादा, मेरी अपनी मांग उन पर थोप देना। क्या? नहीं, सुनिए तो सही, मेरी अपनी जो बिलीफ है, मेरी विचारधारा है, किसी और पर जबरदस्ती थोप देना गलती होगी। प्लीज हियर मी आउट विनोद बंसल जी, दिस इज व्हाट महात्मा गांधी सेड। ही सेड, हाउ कैन आई फोर्स एनीवन नॉट टू स्लॉटर काउज अनलेस he or she is himself so disposed? It is not as if there were only Hindus in the Indian Union. There are Muslims, Parsis, Christians, and other religious groups. पूरी बात सुनिए। I have long pledged to serve the cow, but how can my religion also be the religion of the rest of the Indians? It will mean coercion against those Indians who are not Hindus. देखिए, बात दो चीज है सर। आपकी मान्यता एक है, देश में बाकी लोग हैं जिनकी मान्यता अलग होंगी। एक सेंटेंस और पढ़ दीजिए, आगे वाला सेंटेंस भी पढ़ दीजिए। उन्होंने क्या कहा था? क्या? आई एम विलिंग टू मेक द लॉ, the first law of the independent country should be to ban cow slaughter. No, sir, that is what the Constitution provides. Article 48. Article 48 of the Constitution says 48A, protection and improvement of environment and safeguarding forests and wildlife. Article 48 says take steps for preserving, improving breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and drought cattle. That is what draft cattle. Sorry, that's what they are saying. This is Article 48 says no. You work towards the ban against cow slaughter, but you cannot decide what people eat, what people choose to. That is their individual choice. विनोद बंसल जी, मैं इधर मुद्दे अलग हैं। इनको आप मिक्स मत कीजिए, मुद्दों को मिक्स मत कीजिए। देखिए, दो चीजें हैं जो गलत है। ये तो मेरा अधिकार है खाने का। सुनिए, अगर मैं पोर्क खाने लग जाऊं तो नहीं, आपको क्या लगेगा? तो आप खाइए ना, महात्मा गांधी की आपको जो खाना है आप खाइए, आपको जो खाना है खाइए, पर दूसरे की थाली में मत उसको परोसिए। सुनिए, आपको जो खाना है, पूरी कांग्रेस, अरे विनोद बंसल जी, आपको जो खाना है खाइए, लेकिन दूसरे की थाली में मत परोसिए। जो बीफ खा रहे हैं वो आप पर तो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, वो मार्केट पे जाकर सही जो बीफ अवेलेबल है उसको खरीद के उसको खा रहे हैं। उसमें देखिए, आप मुद्दों को भटकाइए मत। आज का डिबेट दो विषय पर, सुनिए, आज का विषय दो विषय पर है विनोद बंसल जी। सुनिए, देखिए, वो करे बीफ पार्टी, आपको क्या फर्क पड़ता है? वो सड़क, वो जाके जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बीच सड़क में एक गौ की हत्या की और उसके स्कल को लेकर बछड़े को मारा और फिर लेके गए, वो गलत किया उन्होंने। हमने सबसे पहले पूछा, अलीमुद्दीन खान यहीं बैठे थे, वो जानते हैं उन्होंने गलत किया। हमने सबसे पहले उनको ये, और सबने उसको कंडेम किया। लेकिन मैं आपसे बात कह रहा हूं, सुनिए, अब आप सुनिए, आज का मुद्दा आज के मुद्दे दो हैं। सुनिए, आज के मुद्दे दो हैं। एक, गौ रक्षक के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और जान ले रहे हैं, वो गलत है। दूसरा जो कैटल की, जो गौ की तस्करी कर रहे हैं, वो भी गलत है। गुंडागर्दी कर ही नहीं सकता। क्या? तो क्या हो रहा है? कैसे लोग मारे जा रहे हैं? हत्या कौन कर रहा है? ये हत्या कौन कर रहा है? मुझे ये बताइए आप, तो ये हत्या कौन कर रहा है? मुझे ये लोग मुझे दो सवाल पूछने दीजिए। आप नहीं पूछ पा रहे हैं, गौ रक्षा के नाम पे कर रहे हैं, गौ रक्षा के नाम पे कर रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं आ रहा? आपको गुस्सा नहीं आ रहा? गौ रक्षा के नाम पे वो लोग ये सब कर रहे हैं, आप कह रही हैं, आपका नाम बदनाम हो रहा है। आप मुझे बताइए, ये फिर कैसे हो रहा है ये सब? मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, प्रधानमंत्री ने आज क्या बोला, शायद आपकी समझ में नहीं आ रही है ये बात। Today I want to say a few words and express sadness. मुझे बहुत दुख हो रहा है। प्रधानमंत्री ने ये कहा, विनोद बंसल जी सुनिए, शायद सुना नहीं आपने प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। We are a land of non-violence. सुनिए, we are a land of non-violence. We are the land of महात्मा गांधी. Why do we forget that? क्यों भूल जाते हैं हम ये
किसी को हक नहीं कि वो लॉ को अपने हाथ में ले। तो जब तक कि आपके पास लॉ नहीं बन जाता, जब तक कि आपके पास लॉ नहीं बन जाता विनोद जी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। होना चाहिए आखिरकार क्यों निरीह जानवर। सैयद आसिम बकर, मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं जी। मैं बंसल जी से सिर्फ 2-3 सवाल पूछूंगा, भले ही उसके बाद मुझे पूरी डिबेट में बिठा कर रखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मोदी जी के बयान पर इसलिए यकीन नहीं हो रहा है, वो शक के दायरे में उनका बयान है कि मैं आपके सामने 3 बहुत अहम घटनाएं गिनाना चाहता हूं। एक अलवर में पहलू खान की हत्या हुई, दूसरी प्रतापगढ़ राजस्थान में जफर खान की हत्या हुई, और तीसरा आप लोग को याद होगा तमिलनाडु के हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी राजस्थान से गाय खरीद कर ले जा रहे थे, उनको गोरक्षकों ने बहुत मारा था। और मैं सिर्फ इस पर ध्यान दिला रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का सुनिए बंसल जी, आपकी बात, अरे सुनिए, अभी आप बोलिएगा, अभी आप, अरे सर शांत पुजारी की, अभी आप बोलिएगा, अभी आप बोलिएगा, बंसल जी, जितना आप ये बात रिपीट करते जाएंगे ना, जितना आप इसी पे विवाद करते जाएंगे ना, उतना ही ये प्रूव होगा कि प्रधानमंत्री की बात आप लोग ने नहीं सुनी। अरे बात ही नहीं करने दे रहे हैं आप लोग प्रधानमंत्री को, मुझे बुलाते ही बेकार है आप लोग। प्लीज सुनिए सैयद आसिम बकर, आप लोग बुलाते ही बेकार है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने मैं सिर्फ ये सवाल, अरे बंसल जी सुनिए भाई, आप पता नहीं किस मिजाज के आदमी है। बंसल जी रुकिए, आप बात ही नहीं सुनते हैं किसी की। विनोद बंसल जी, इनकी बात सुनिए, उसके बाद अभी गौरक्षा करा रहा हूं आपसे, एक बात तो सुन लीजिए, गौरक्षा भी करा रहा हूं। बोलिए, मैं आप ही से गौरक्षा कराऊंगा, बोलिए ना, मैं नहीं करूंगा। सुनिए, प्रधानमंत्री जी अगर ईमानदार बयान दे रहे थे, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, खुद देश के प्रधानमंत्री हैं, पहलू खान के मामले में 6 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें से अलवर का एक आरएसएस का बहुत बड़ा नेता है, एक भी अरेस्टिंग नहीं हुई। जफर खान के मामले में कोई अरेस्टिंग नहीं, जो तमिलनाडु के अधिकारी मारे गए, जिनको बहुत मारा गया, उस मामले में भी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। ये शक पैदा करता है, शक पैदा करता है। दूसरी बात, बंसल जी की तरह टेस्ट कितने बड़े गो भक्त हैं, विनोद पुलिस हटा दो और मैं बात मुसलमान बना दूंगा। बात सुनिए, रुकिए। हाँ, अरे तमीज से बात कीजिए भाई, मुझे ऐसा लगे लोगों को देखने में। बंसल रुकिए ना, वो जो आरोप लगा रहे हैं लगाने दीजिए, सुनिए तो सही, वो क्या बोल रहे हैं सुनिए तो सही, कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ सामने पता लग जाएगा। दूसरा सुन लीजिए, हाँ दूसरा सुन लीजिए। देखिए, इखलाक को शक में मार दिया, बिल्कुल पहलू खान को शक में मार दिया। अभी एक अंसारी मारा गया परसों, जिसको झारखंड में शक में मार दिया। ठीक, आज एक हत्या हो गई, शक में हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे बंसल जी से नाम ले रहा हूँ, किरण रिजिजू, उन्होंने ऐलान करके कहा कि मैं बीफ खाता हूँ, है किसी की औकात जो मुझे रोक ले। जस्टिस मरकंडे काटजू, उन्होंने कहा मैं भी बीफ खाता हूँ, मुझे कोई रोक के दिखाए। नागालैंड के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? देखिए, ऋषि कपूर जी, सवाल पूछ रहा हूँ। सैयद आसिम बकर जी, सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपको, आप बाकी लोगों को तो शक में मार रहे हैं, यहाँ तो सबूत है। आप मार्केट में पैंट गीली हो जाती है आपकी, के बारे में बोलते हुए। आप मेरी बात सुनिए, आपकी पैंट गीली हो जाती है। अरे आप मेरी बात सुनिए, अभी मैं बोलना शुरू करूंगा, आप यहाँ से भाग जाएंगे। आप कितने बड़े, अब मैं बोलना शुरू करूंगा। आसिम बकर, अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। सबको पता है आप कितने बड़े गोभक्त हैं। अरे आसिम बकर, फ्रॉड हैं सब लोग, सुनिए, आप देश को लेके जा रहे हैं आतंक की तरफ। अब आप रुक जाइए, आपको जवाब देना चाहते हैं विनोद बंसल, हमारे बाकी पैनलिस्ट भी हैं, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, उनको भी बोलने दे, रुकिए। अब यही प्रॉब्लम है आसिम बकर, आपको नहीं रुकिए आसिम बकर, आपको 1 मिनट देते हैं, आप 10 खींच लेते हैं, क्यों करते हैं आप ऐसा? इरादा क्या है आपका? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आपने जितने नाम गिनाए, मुझे एक बात बताइए, मैंने सवाल पूछा, आपने जितने नाम गिनाए मुझे बताइए, आज तक आपने कितने, आपको कितने नाम याद है, आपको कितने नाम याद है जो गौ की तस्करी कर रहे हैं, जो कैटल की तस्करी कर रहे हैं? कितने तस्करों के नाम आपको याद है? कितनों को आपने पकड़ाया? कितनों को आपने कहा, आपके लोगों ने कहा देखिए ये तस्करी कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिना परमिट के लेके जा रहे हैं, इनको रोकिए आप? कितने लोगों को आपने रोका? मुझे बताइए ना। आज कितने आप जब पहले समाजवादी पार्टी में थे, कितने ऐसे स्लॉटर हाउसेस थे जो बिना लाइसेंस के काम कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? मैं जवाब दे रहा हूं। आप मुझे बताइए।
तब वो सब आप नहीं गिनाएंगे। मुजफ्फरनगर में से कितने लोगों को मुजफ्फरनगर में से कितने लोगों को जस्टिस मिला है? कैराना में कितने लोगों को जस्टिस मिला है? मुझे बताइए ना, की बात ही नहीं सुनते। मुझे बताइए रामपुर में कितने लोगों को जस्टिस मिला है? मुझे बताइए। किसकी सरकार है? मुझे बताइए। गोवा में आपको वही लोग दिखते हैं जिनके आगे मुसलमान के नाम लिखे हैं। आपको इंसान की लाशें नहीं दिखती, जाने नहीं दिखती। आपको सिर्फ एक कौम की लाश दिखती है, एक कौम की बात। हमको सबकी लाशें दिखती है, हमको सबकी मौतें दिखती है। हम सबसे सवाल पूछते हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो बांटने का काम कर रहे हैं। आप चुन चुन के ऐसे नाम ला रहे हैं ताकि आप एक चीज को दिखा सकें कि ये आरएसएस का हुआ बना सकें। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो गलती कर रहे हैं सब गलती कर रहे हैं। एक बात बताइए, अगर उस व्यक्ति के पास उसके पास पेपर्स हैं तो वो भागा क्यों आज? अगर वो तस्करी नहीं कर रहा तो भागा क्यों? 50 पुलिस वाले के पास पुलिस के साथ क्यों नहीं जा रहा कि मेरे पास पेपर्स हैं? 50 मुझे एक बात बताइए, कितनी तस्करी होती है उत्तर प्रदेश से नेपाल में? हरियाणा के हर साल में 1.5 लाख गांव की चोरी होती है कि नहीं? आपने कितनी चोरियां रोकी? आपने कितनी तस्करियां रोकी? अरे छोड़िए, अकलमंद आदमी है। दोनों तरफ की बात कीजिए। आप भी बंसल की तरह है। जीवीएल नरसिम्हा राव, गुड इवनिंग। आप बिल्कुल दोनों तरफ की बात बोलिए, दोनों तरफ की बात बोलिए, दोनों तरफ की बात बोलिए। हर जान कीमती है, हर जान कीमती है, और जो गलती कर रहा है हर कोई गलत है। जो तस्करी कर रहा है वो भी गलत है, और जो रोक के कानून अपने हाथ में ले रहा है वो भी गलत है। दोनों साथ में बोलिए तो मैं मानूंगा आपकी बात आसिम वकार, नहीं तो नहीं मानूंगा मैं आपकी बात। आप एंकर बनकर यस जीवीएल नरसिम्हा राव, मेरी आवाज बंद करके आप कैसे? आपकी आवाज बंद नहीं है, आपकी आवाज बंद नहीं है। अब लग रहा है आपकी कुर्सी थोड़ी ढीली हो रही है। मैं कह रहा हूं हम भागे, कौन संभाले थोड़ा। हमारे ऊपर यस जीवीएल नरसिम्हा राव, बता के आइए। यस जीवीएल नरसिम्हा राव, आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं। जितने गोरख, अरे अब आप रुकिए, अब थोड़ी तहजीब, अब थोड़ा रुकिए। जीवीएल नरसिम्हा राव, आदमी जा रहे हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव, ऐलान करके जाएंगे। जीवीएल नरसिम्हा राव, आजम खान के बारे में आपको क्या कहना है? 3 आदमी को घेर के मारते हैं अकेले। अरे आजम खान के बारे में आपको क्या कहना है? हैसियत है जीवीएल नरसिम्हा राव, करके जाएं। जीवीएल नरसिम्हा आजम खान हो, you see, I think it's really, I think it's a waste of time arguing with people like OIC or his party members, because OIC and his party members don't have any faith in the highest court of the country. They claimed even Yaqub Memon was innocent. So for a party like this, which doesn't really have any respect for rule of law, I think we should not have them actually participate in debates like this. They have no respect even for the Supreme Court. They call terrorists innocent people. They want ISIS recruits, ISIS members to be bailed out by आपके पास सईद हसीन वकार कोई legitimate point तो है नहीं, डायलॉग मारने के लिए मत बैठे रहिए, सुनिए दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। About the lynching, I think every lynching, every lynching is a condemnable act. It's a heinous act. Can I have my say? Saeed Waqar, please hold on for a minute. Saeed Hashim Waqar, hold on for a minute. आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप उनकी बात समझने तो दीजिए क्या बोल रहे हैं, आप चिल्लाते जा रहे हैं। रुकिए 2 मिनट। Lynching is a heinous crime, and it must be punished in accordance with law. Whatever be the reason for the lynching, it cannot be really clothed in any kind of a moral cover. Every lynching is condemnable. But I want to ask these questions. Did lynchings not happen when Sonia Gandhi was running a government at the center? In 2012, 16 lynchings happened. In 2013, 12 lynchings happened. And Prashant Pujari was lynched in Karnataka. Our cadre Sujit Radhakrishnan and his brother's wife, they were all lynched in Kerala. But why do we look at this from a religious prism? Why is this being used to somehow try and damage India, brand India's name? And why do these campaigns come up? Why does it come up when Prime Minister is traveling abroad? Why do these campaigns have always happened? You all have collectively failed to stop that as an incident that happens in our society. Then why are you being selective today and giving it a communal color is the charge from the BJP? I want to make 3 statements. Yesterday, I requested the Prime Minister to make a statement, take this issue head on. I welcome that he has taken it head on. In the past, we have seen the Prime Minister communicating very effectively to every Indian across the globe
and he has communicated in 2 ways: on ideas that he himself does not believe, like black money, like minimum support price to farmers, and on ideas that he absolutely believes, like GST, surgical strikes, demonetization. So when he believes in an idea, he knows how to really communicate that idea and get it done. Now, the world is watching. The entire international press has reported on Prime Minister's statement, and the world is watching whether he will walk the talk. Will he just communicate like in black money or minimum support price to farmers? Of course the world is watching. Of course the world is watching. Today we can't sit and say whether it's effective or not. Second, what the Prime Minister has said, or go by what Mr. Vinod Bansal is saying. I don't think these self-appointed cow vigilantes are hearing him, but we will have to wait and watch on that. We can't judge that right now. Ghanshyam, the question to you is, what about all of those incidents that happened when SP was in power? What about those incidents? Did you deliver justice? What happened in Dadri? Who was in power in the state at that point of time? There are 2 things that are... Did you offer protection after that to people? Did you raise the level of protection and law and order in the state? He has rewarded the cow slaughter. There are 2 things that we must not forget. One, we find ourselves in an atmosphere where we do not know, even GVL or any of the state governments where BJP is in power, where they can boast of law and order. We do not know where the next lynch mob is, who will be the next victim. We do not know who the next victim is. So there is a poisoned message that has gone across the country, and somebody has to check that message. The entire country should come together because it affects our identity as Indians. Second, when you start putting out statistics, what he has said yesterday. When you start putting out statistics in the past 3 years, the number of lynchings have risen by 97%. And somebody has to be accountable to that. So when the Prime Minister of the country is speaking about this, from Sabarmati, let us respect the fact that he understands that it is a national issue. Please tell me this. Please tell me this. On what basis have you decided that all Gaurakshaks are Hindus? And on what basis should anyone decide that all cattle smugglers are Muslims? I did not use the word Gaurakshak at all. No, I'm asking you. I have not used the word Gaurakshak. I'm asking you, who's responsible for this perception? Gaurakshak, love jihad. Hang on. No, hang on. Both statements are wrong. So, both statements. No, please, Ghanshyam Tiwari. What I'm saying is, please let me make my point. Please let me make my point. I'm saying both these statements are wrong. Sure. Both these statements are wrong. To put any religious innuendo or religious connotation to any wrong act is wrong. But look at the perception that's been created. Sabah Naqvi, good evening. Wrong is wrong. Sabah Naqvi, come on. Hindu or Muslim. Sabah Naqvi, yeah. Should have a dare to say good evening, Anand. Allow me to say one thing. Allow me now. I hope, Tanvi, you are always talking about women's power. I see your promos. You should allow women to speak up a little earlier. You have given people who are, on doing brinkmanship. They have gone on and on and on. Anyway, the issue today is that the country has been confronted with a serious issue, and the Prime Minister has responded. He made a wonderful speech. He has responded. The question now is, if you look at the history of how Narendra Modi ruled Gujarat, it is a political challenge for all people in the BJP to contain sections of the larger parivar. And after his turbulent first year in Gujarat, Narendra Modi, to an extent, made the Vishwa Hindu Parishad pretty powerless. And we all know of the poor relations and the falling out with sections of the parivar. That happened when he was Chief Minister in Gujarat. His own government is going to be destabilized with this kind of violence without an appearance of punishment for this kind of violence. So he has done the correct thing at this point. Tragically, we are confronted with a situation where on the same day, another man has been lynched in Jharkhand. So this is a serious issue, and there is a complex situation we are confronted with. Yes, and the reality is this: the issue is not cow protection. Cow slaughter is banned in most parts of India. The issue is prejudice, where people use the cover of protecting the cow to attack people, a community against which they are prejudiced. That is very often the narrative. We have seen what happened
and there is a lot of hate. The problem is if unless the Prime Minister speaks up and other regimes come forward, anybody can be attacked. In many areas, Hindu and Muslims live they live separate lives. At any point, communities can be attacked because there are people who just don't like Muslims. Let's face it. It just happens. No, but the same way, Sabah Naqvi, there are Muslims who just don't like Hindus. So why don't you say that too? Sabah Naqvi, please. Don't say there are people who don't like Muslims. Please also say there are Muslims who don't like other people. Say it in the same breath, please. Say it in the same breath, please, because that's what I'm trying to say. It's when you paint only one side of the picture, that's when the perception is created. Like I said, I don't think all Gaurakshaks are Hindus. Neither do I think all cattle smugglers are Muslims. Both people who take law in their own hands are all lawbreakers. They should not have any religious connotation attached to it. Anybody who takes law or who breaks the law is wrong under the eyes of the law. There is a religion connotation. Why is there a religious? Who is adding the religious connotation? You did just now. You did just now, and very conveniently you did. Very conveniently you did. What did you say just now, Sabah Naqvi? What did you say just now, Sabah Naqvi? I am talking to you on the same day. When I am talking to you on the same day when there was a lynching in Jharkhand. Have you seen the video? My point is, just like you are saying, there are people who don't like Muslims. There are Muslims who don't like people. Let me tell you that. There is a communal So say that too. Say that too, please. Because that's when you're going to be a very, very balanced and a neutral person, rather than painting a perception. Because when a Muslim goes out and lynches a Dalit, you are not outraged. But you're outraged when a cattle smuggler is lynched by a group of people posing themselves as goons, and rather than reporting him to the police, and that person turns out to be a Muslim, there is outrage. I am asking you why? Why is this selective outrage? The outrage should be both places because people are losing lives. It's a person who's lost their life. Ashok Pandit. Why can't we just say people should not die? Nobody should kill. Forget Hindu, Muslim. Nobody should kill anybody. And nobody should break the law. Anybody who breaks the law is wrong. That's all. Why paint a Hindu-Muslim picture? Do you want a reply or you just want to rant? Anand, do you want a reply or you just want to rant? Why? When I say something, I'm ranting. When you say something, you're making a point, you're making a comment. Anand, you can just why should you say that? Why should that be the position, Sabah Naqvi? Why should that? When I'm saying something, I'm ranting. But when you're saying something, you're making a very, very intelligent point. When you selectively say people hate Muslims, why didn't you say Muslims also hate people? There are certain Muslims who hate people. Please say that too. You have first given a ranting opportunity to the Don't grudge that. Don't grudge that. Don't grudge that. Don't grudge that. We believe in equality to all. Some days we start with you, some days we start with somebody else. So you don't need to grudge that. Come on, Sabah Naqvi. We are in a debate and everybody's got to make a point. I agree with you on a lot of things, but I also have the right to disagree with you. And I respect you a lot. I respect you a lot. Respect you a lot. Let's just not get caught up in the heat of the moment, please. Yes, Ashok. Anand, can I come in? Yes, Ashok Pandit. Anand, can I come in? Yeah. Anand, I definitely denounce and condemn what any kind of lynching is concerned. But on the other side, what I want and I'm concerned is the lynching by these pseudo-intellectuals. The people like Sabah Naqvis, like Tirsa Satalwads, the same faces who were there as part of Award Wapsi gang. Yesterday we saw them in Not In My Name slogan. They have a right to do that. Sabah Naqvi, I want to ask you a very simple question. 15 days back, we had taken out a demonstration about a lynching of Samir Bhatt, a constable in Kashmir who was lynched, killed, murdered and put inside the river. Nobody spoke about it. There was no, Not In My Name slogans outside. Lasakal, Premnath Bhatt, lynches after lynches of Kashmiri Pandits in Kashmir. Why was there not any Not In My Name? I don't want to rant about Kashmiri Pandits because I'm tired of doing that. But my fear is these very people who have under a design tried to fight against Narendra Modi right from 2002 and failed in doing that. They find out a reason to come out on the streets with communist backing, with the pseudo-intellectuals, with Shabana Azmis, with Tirsa Satalwad, and the same group of JNU. They come out on the street and they, under a design,
tried to denounce Narendra Modi. Now what happens is that the real cause, the real fight of Gaurakshaks is the real reason we should address the issues they want to address. Why should you impose a diktat and ask questions that why did you not protest on this issue or that issue? Ghanshyam, wait a minute. Ashok Pandit has made a very clear comment. Shouts with schemes. Point taken, Ashok Pandit, and I think since you directly addressed this to Sabha Naqvi, Ghanshyam, let her respond to that, and I will come to you on your question about why did you not act then and speak out today. Ashok Pandit, point taken. Let Sabha respond to you, please. Yes. Ashok Pandit, I just need 30 seconds from Sabha Naqvi. Let me ask you this. What do you have to say to those people who are wearing saffron, holding a lathi, saying Jai Shri Ram, and bashing up people on the middle of the street? Who's giving them the courage to do that? What do you have to say to them, Ashok Pandit? No, Ashok Pandit. What do you have to say to them? They have ruined this country. What do you have to say to these people? Today there was a self-proclaimed Baba with about 100 of his henchmen standing in Parni and attacking people who are doing a legal job of transferring or transporting cattle. What do you do with these lot? Who is emboldening this lot? Why do I need these people in society? Like I said, Ashok Pandit, we are cutting no corners and we are not taking sides. We are saying both sides are wrong. Anybody who takes... They should be punished. They should be punished and put behind the bars. No, but that's the grouse. That's the grouse. That's the grouse. That's the grouse. That's the grouse, Ashok Pandit. The grouse is they are not being punished. They are not being punished. The grouse is they are not being punished. The grouse is they are being let off. They should be. But they've never been punished. They should be. They're probably more emboldened today. It's not even to say that before this government came to power, they weren't there and they weren't doing the same thing. And they were probably not even punished then, Ashok Pandit, but they're emboldened today. And that has to change. But before I go to GVL on that, Sabha Naqvi, please. Yes. Sabha Naqvi, that was a direct charge. They should be put behind the bars. It's nice to hear that, but it's not happening. That's the reason why we're having this debate today. What is the question? Sabha Naqvi. No, he alleged. Selective outrage is the allegation. What is the question? But let me Selective outrage is what Ashok Pandit accuses you of, that you show outrage when a certain set of people are lynched, but not when others. Okay, right. Selective outrage. Mr. Pandit, you cannot decide. You cannot decide. There has been a lot of talk in all the television studios at prime time. There's been a lot about the Indian Army. Fair enough. There has been a lot about Kashmiri Pandits. You are all their vocals. You tell me how many prime-time debates have taken place over the lynching of ordinary Indian citizens. Tell me that, sir, since you are keeping track of the activities of pseudo-secularists. As you say, tell me how many of them have happened. They have not. And if citizens choose to have a protest, let me finish. I'm still speaking. Sabha Naqvi. Did you come out and Sabha Naqvi? Let GVL Narasimha Rao respond to that. Syed Asim Waqar and Alimuddin Khan want to come back. But GVL Narasimha Rao, Sabha Naqvi asks, how many prime-time debates have happened as far as lynchings are concerned? Somehow the count goes up. The count goes up ever since your government took charge. The count of the debate goes up ever since your government took charge. No, debates like this have happened for a particular religious denomination. But I can tell you, every month there is such incident happening in Kerala. Prashant Pujari, tell me which channel has debated it? Sir, name the left guys also. Name the left guys also, which the right wing butchered. Along with those who you name from the RSS faction or from the BJP, also name the ones that the lefts have lost. Because lives are lost from both sides. No, but what is wrong is wrong, sir. What is wrong is wrong, sir. You can't be selective. Sir, our question, our point is you can't be selective. We are across the country.
Yes, you cannot be selective, but why do debates happen only when lynching happens of a particular denomination? No, that's not true. No, that's not true. It's a great No, that's not true. You both camps can use that. Both camps, no, it's not true. It's not true here. GVL Narasimha Rao, both camps can use that on each other. We have done debates. We have also done debates when lynchings have happened in Kerala. When RSS workers have been lynched. We have done debates. We were the only channel that did a debate on the lynchings that happened in Jharkhand, which were not even communal in nature. We picked up the lynchings in Kashmir and we're doing it elsewhere. So don't make that charge. Don't make that charge when you're sitting here on the Newshour debate, because we have not differentiated. Others may want to selectively outrage. That's their choice. My question to you as a follow-up is this, GVL. In August, when I heard the Prime Minister the first time speak about Gaurakshaks and the Vigilantes, these self-appointed groups, when he said they're not even Gaurakshaks. वो दिन में कुछ और होते हैं, रात को कुछ और बन जाते हैं, गुंडागिरी चल रही है, ये नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, ये violence. That was the first warning. Today it was stronger. But tell me, to your mind, GVL Narasimha Rao, why is this still going on? Why is it still going on? Is it because strict action is not being taken that this mentality is becoming stronger and emboldened? No, it's not because there is no message. It's not because there is no action. There are some criminal elements who will continue to indulge in acts of criminality. They need to be condemned. They need to be acted against. Yes, they need to be. That's my point. But that's not happening, is it? From Sonia Gandhi. But that's Gandhi, okay, GVL, my humble request to you, we can have that part of the debate and Alimuddin Khan can take you on that in just a bit. I genuinely just want to say, let's not do a comparison right now, GVL Narasimha Rao. You are in power. It is your responsibility. It's a bogey to target the BJP. No. It's a bogey to target the BJP. Do the political bit. Do the political bit in just 30 more seconds. There are incidents happening. Your government is in power. Our Prime Minister has spoken about it. GVL Narasimha Rao, please listen to me. Please listen to me. If our Prime Minister thinks this is, he obviously thinks it's a big concern. If it's happened twice that he's spoken on the issue, he's spoken in August 2016 and he's spoken again now. Twice he's spoken in less than a year. It's clearly a big concern even for the government. My question to you is very simple. What is the government's strategy to ensure this stops or comes down? There's clearly an emboldening of thought that we can get away with it. There is a petition in Supreme Court. Doesn't matter who filed it. Doesn't matter who filed it. The fact is, the court has asked 5 state governments, including Karnataka, by the way, that's ruled by the Congress right now, whether these cow vigilante groups should be banned. It has been acknowledged as a big concern. What is the government's strategy? Karnataka Congress government said no. Yes. In fact, the Karnataka government filed an affidavit in the Supreme Court. And what is the centre's response? There should be no. And what is the centre's response? I think centre will respond, I think, at an appropriate time. Hasn't yet responded. It is an affidavit that the central government hasn't yet responded. But what is the strategy, GVL? Before we go back to the political fight. No, we are for protection of cows. I'm saying it openly. We are for protection of cows. We want the anti-cow slaughter laws to be implemented. What about protection of humans? With full measure. What about protection of human lives? But at the same time, no individual can take law into their hands. Anyone who is under the garb of cow protectee, under the garb of a cow rakshak, if somebody is indulging in acts of violence, I think they must be taken to task. Alimuddin Khan. Tanvi ji, first of all, I want to take opportunity of your program. Bakar sahab, after Alimuddin Khan. Sub-Inspector Sahib Sukla's funeral is supposed to be done tomorrow, and his family is crying in Varanasi. Now, what I want to demand and what the opportunity I want to take is that government should quickly announce award and compensation to all those who are being martyred on our borders. That is my concern today. Now I join your debate, sir. Prime Minister has said during something happened in Punjab that these are gundas.
this gundagardi nahi chalegi, na chalne dunga. But his words are not being translated into action, sir. His words should be translated into actions. You know the death of Junaid. He belonged to the area Mewat, very close to Delhi. And they want to make Mewat another Prayogshara. If they do that for the political purpose, it will be disaster to the country, sir. We have to think, BJP have to think, BJP have to think out of the political box. They have to think beyond politics. It was a disaster also when Arun Mahar was killed. Please. It was a disaster. Why it was not disaster when Prashant Mahar was Prashant Pujara was openly killed by a mob? What for your government doing? Please give what was the government of Karnataka doing when Prashant Pujara was killed by the mob? My point is, hang on. Government was doing in Agra when Arun Mahar was killed by the mob, killing any Hindu when he was going to protect the cow. Also not acceptable to us and to the law. Is this now please let me please wait. Alimuddin Khan and Mr. Bansal ji and Alimuddin Khan. आपके ऐसे चिल्लाने से आपके सुनिए तो सही सर आपके ऐसे चिल्लाने से ना प्रशांत पुजारी वापस आने वाले हैं ना पहलू खान वापस आने वाले हैं। दोनों की मौत हुई, दोनों को मारा गया, दोनों जाने थी। नहीं, इनकी मानसिकता तो ठीक हो जाएगा। दोनों जाने थी। नहीं देखिए वो आप इनकी मानसिकता पे सवाल उठा रहे, वो आपकी मानसिकता पे सवाल उठा रहे हैं। आप एक बात समझिए विनोद बंसल जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। Point is, please understand this. On ground today, anybody and everybody who thinks he wants to commit a crime, he's trying to portray himself from one color, one faction or the other. Saying कि क्या सीधा दोष उधर मत देंगे। GVL Narasimha Rao, you're battling this game. You're battling this very dangerous perception issue where anybody and everybody, which is a right-wing fringe, any fringe group, any group of lumpens, louds, gundas, whatever you want to call them, if they dress themselves in saffron, wear a tika and say Jai Shri Ram, go and kill somebody, the direct association is with your government and with the RSS. Rightfully or wrongfully, I'm not even questioning facts. I raised this point earlier too, sir. I'm not saying this is factful. I'm not saying this is backed with facts. It might be fiction. But please understand, you are battling a perception. You are battling a perception. The point is, there are those who are also fueling a perception that Muslims are in danger and they are being selectively and purposely being targeted under this faction, under this regime. They forget what happened within the last 2-3 decades of Congress, non-Congress, minority appeasement rule. What was done, what has been done with the minorities at that point in time, they forget, because right now they are just being fed fear. They are being fed fear that the majority is out to get you. Please understand, sir, you are battling a perception. That's the dangerous game that's being played right now. And these elements are playing you, leading you right up to the altar to be chopped on the block. As a minority, that's what's happening. Right to attack on the majority. Sayyid Asim Wakar. Several years. Sayyid Asim Wakar. मैं बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन शांत करा दिए तो दो अल्फाज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जेवीएल साहब से। आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग इस तरह की हत्याएं कर रहे हैं, they are not गौरक्षक, they are criminals। ठीक है ना? जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि क्रिमिनल थे जो लोग इस तरह की हत्या करते हैं। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैंने पहले 3 नाम लिए थे, पहलू खान, जफर खान और जो हमला हुआ था तमिलनाडु के अधिकारियों पे, उन पर आप खुद मान रहे हैं क्रिमिनल्स ने हमला किया है। तो ये क्रिमिनल्स गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये क्रिमिनल्स गिरफ्तार क्यों नहीं हुए आज तक? ठीक है ना? दूसरी बात, आप पूरे हिंदुस्तान में गौरक्षा की बात करते हैं। गोवा में आपकी सरकार पिछले 15 साल से चल रही है सर। आप वहाँ काऊ स्लाटर कराते हैं, गाय का गोश्त कटवाते हैं, बिकवाते हैं सरकारी तौर पर। सर वहाँ तो आपकी सरकार है, वहाँ तो ना आसिम वकार जाएंगे ना असद ओवैसी साहब जाएंगे, ये विजय बंसल साहब जा सकते हैं, वहाँ तो जाते नहीं है, वहाँ के बारे में आप बोल भी नहीं रहे हैं। वहाँ कौन रोकेगा?
सर इस मुल्क को अफ्रीका मत बनाइए, सोमालिया मत बनाइए, कीनिया मत बनाइए, ईदी अमीन का मुल्क बना बनाइए। बहुत अमन चैन का मुल्क है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अकेले चलना छोड़ दें और झुंड में चलना। बहुत कम टाइम बचा है, नहीं तो मैं आपसे ये पूछती कि आपकी अभी वाली पार्टी या पिछली पार्टी ने क्या कर लिया सिचुएशन को सुधारने के लिए, वो तो मैंने आज तक नहीं देखा। बैठ के सिर्फ ऑपोजिशन पे अटैक करना अलग बात होती है, बैठ के दूसरों को सवाल पूछना अलग बात होती है। खुद क्या आपने लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करने के लिए कभी किया, वो पता नहीं, हमें नहीं पता। पर अब इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के आपसे ये बहस करूं। जीवीएल नरसिम्हा राव से आपने एक सवाल पूछा, जीवीएल नरसिम्हा राव, as you respond to that, GVL, will the people also tell me, will the people within your party, some motor-mouth, loud-mouth netas here and there are few in every state, will they get the message? Because this is what one BJP MLA said after Pehlu Khan's murder. We have no regrets over his death because those who are cow smugglers are cow killers. Sinners like them have met their fate earlier and will continue to do so. It's not a statement an MLA should be making of any party. Tanvi, we don't approve of any such comments. Should start stacking these kind of people. We want all the anti-cow slaughter laws start to be implemented. Start sacking these kind of people, GVL. Message, Prime Minister's message is loud and clear. I think it is heard with rapt attention by everyone in the country. Anyone who is making comments which are not in they heard with rapt attention in August 2016 too. Will certainly face action. Will certainly face action at an appropriate time. Sir. But I'm so glad that the parties like MIM want to talk about rule of law when they seem to have none at all. And they are worried about converting this into Africa when they want to really my point is GVL Narasimha Rao, when a BJP MLA comes out and says राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी में हूं, उसी ओवैसी साहब की पार्टी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो आप अकबरुद्दीन ओवैसी सर्वोच्च सांसद का अवार्ड दिया है। सर्वोच्च सांसद का अवार्ड दिया है। साहब के कमेंट से इत्तेफाक रखते हैं। प्रधानमंत्री अवार्ड दे रहे हैं। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कमेंट से इत्तेफाक रखते हैं। इंडिया का अवार्ड मिल रहा है। उसके बारे में मुझे बताएं कि आप अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कमेंट से इत्तेफाक रखते हैं। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो मैं आपकी किसी बात को जायज नहीं ठहराऊंगा, किसी भी आर्गुमेंट को मैं आप समझूंगा ही नहीं। बट दिस इज अ प्रॉब्लम. The problem is, Sabah Naqvi, as I wind up with you, because you will say that you never, so that you don't hold it against us here on the Newshour. You might not have had the first word, you'll have the last word. Yes, Sabah Naqvi. You know, Anand, let's have an honest debate. The first lynching that I saw in my life, I was a school student, was when in Delhi, when the Sikhs were lynched all around me. One saw neighbors being lynched. Let's be honest about it. So we should not camouflage anything in dishonesty. That is the first time as a young person when one realized that society can commit horrific crimes on its own. It was a very, very traumatic time, and it happened. People one knew their homes were burned, they were lynched. So let's be conscious of that. Now there has been, in a sense, political balance has been queered in a way that a lot of people who are sort of low-level communalists or even outright criminals think कि भाई अब हमारे साथ we can get away with this kind of murder. Now the Prime Minister has given a signal for the second time, and I hope the BJP will persist with the line. And I trust GVL. I will trust him when he says that the message will be, action will be taken at the right time. Yes. But it's a very, very grave problem staring us in the face. Right. And I agree with you that, I mean, the mass lynching that anyone who has been raised in Delhi would remember was when the Congress party was at the helm of affairs. We can never forget that stain in our history, was when Congress party workers went and lynched ordinary Sikh citizens of the city. Yes. So it's a national we asked exactly why we started this show, Sabah, with that question, that what are the people who are saying it's mere lip service today, not even then, today, what have they done? What have they done to stop it? What have they done to change the mindset? What have they done to crack down and implement law and order? Nothing. Even in the states where they are in power, or they have been in power, Samajwadi Party or TMC or the left. But we hope
that the netas of BJP get the message that the Prime Minister sent out as much as the cow vigilantes do, because this has to stop. This must stop now. Completely out of time on this debate. Thank you so much, everyone, for joining us.